Assalamu alaikum, dear students. It's me, your physics teacher. This is our textbook of physics of grade 9 of Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Dear student, today we are going to discuss the branches of physics in this book. You know that from your previous lecture that physics is that branch of science which deals with the properties of matter, energy and their mutual relationship. From this definition we know that physics is a vast and broad field of science. So scientists and physicists divide the physics into different branches to make its study easy and understandable. Dear students, open page 6 of your book. At page 6 there is a title which is branches of physics. एक बात यहाँ से हमारी समझ में आ जाती है कि किसी भी नॉलेज या इल्म को समझने के लिए उस इल्म के जो स्कॉलर्स और जो माहिरीन होते हैं वो उस इल्म को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। इसी तरह फ़िज़िक्स साइंस की एक बहुत वसी फील्ड है, एक ब्रॉड फील्ड है। तो इस फील्ड को समझना, समझाना और कम अरसे में समझना इंतहाई मुश्किल होता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए जो फ़िज़िक्स के साइंटिस्ट हैं वो इस ब्रांच को और बहुत सारे सब ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं और वो ब्रांचेस आप लोगों को इस सफ़ा नंबर 6 में नज़र आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मैकेनिक्स. Mechanics is basically that branch of physics in which we study about the motion. We know different kinds of motion around us. We know that moon is revolving around the earth and the electrons are revolving around the nucleus. We observe different kind of motion in our daily life, such as moving vehicles, falling balls, moving of two bodies over one another. These are the different kinds and types of motions. We also know that motion is related with physics, and the branch of physics which deals with motion is known as mechanics. मैकेनिक्स में हम हरकियात के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। तो मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हरकत के बारे में पढ़ेंगे और हरकत के साथ साथ वो चीज़ें जो हरकत पैदा करती हैं यानी उनके बारे में पढ़ते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं, पुश या पुल करते हैं, तब वो हरकत पैदा करता है और हरकत पैदा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हरकत पैदा करता है। यानी हम फ़िज़िक्स में अगर हरकत के बारे में जानना चाहें तो हम फ़िज़िक्स के मैकेनिक्स ब्रांच में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ कोई इसको पुश करता है तो ये आगे जाएगा। इसका ये जो आगे जाना है, डिस्प्लेस होना है, ये मोशन कहलाता है। और ये मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? ये फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, सच एज व्हेन ए व्हीकल इज मूव स्ट्रेट ऑन अ रोड और व्हेन ए व्हीकल टर्न्स अ कर्व एट अ कर्व या टर्न्स, या व्हेन bee enter into a room and it move in a random. So there are different types and kinds of motion. Another example of motion is a falling balls. Yeah, when we slide one body to another body, this is the another example of mechanics. The second branch of physics is heat and thermodynamics.
Heat is a form of energy, and thermodynamics means the transfer of heat into work and other form of energy. So in heat and thermodynamics, we study about heat and transfer of heat from one form of energy into another form of energy. In this branch of physics, we also study about the melting, freezing processes, engines, refrigerators, thermometers, atmosphere, atmospheric pressure, and other kinds of phenomena we deal in this branch of physics. गर्माइश हम अपने डेली लाइफ में इस एनर्जी की एक फॉर्म को एब्जर्व करते हैं। घरों में गर्माइश की मदद से खाना पकाया जाता है। ये वही गर्मी है जो गाड़ी के इंजन में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी इसको प्रोड्यूस करके और इसकी मदद से गाड़ी को चलाया जाता है। रेलवे इंजन के अंदर इसी हीट की मदद से क्या किया जाता है, रेलवे इंजन को ड्रिवन कर दिया जाता है। तो यानी इन तमाम बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हीट बेसिकली हमारे पास तवानाई की एक किस्म है। तो हीट यानी तवानाई हीट जो हमारे पास गर्माइश जो हीट, तो दुनिया में जहाँ कहीं भी हमें हीट से रिलेटेड कोई इल्म की ज़रूरत हो या हीट के बारे में हमें जानना हो तो हीट को हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये भी फ़िज़िक्स की एक वसी फील्ड है और इसी फील्ड की वजह से आजकल हमारे घरों में जो स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, हमारे घरों में जो कूलिंग प्रोसेस के लिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और वाटर कूलर्स वगैरह हमारे पास घरों में लगे हुए हैं, वो तमाम तर फ़िज़िक्स की इस ब्रांच की बदौलत हैं। तो हीट और हीट से रिलेटेड जो इल्म है इसको हम फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हीट है। फ़र्ज़ करो गाड़ी के इंजन के अंदर ये हीट पैदा होता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ऑयल या पेट्रोल। जब ये पेट्रोल जलता है इंजन्स के अंदर तो इंजन्स क्या करता है, मोशन करता है और इस मोशन की वजह से गाड़ी आगे जाता है, यानी गाड़ी काम करता है, गाड़ी क्या करता है, वर्क डन करता है। इसके अलावा हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर हमारे डेली लाइफ में हैं, जो कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं हमारे घरों में, या फूड प्रिजर्वेशंस के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। वो तमाम तर फिज़िक्स के इस ब्रांच के बदौलत है। एट द लास्ट आई कैन से दैट physics is the physics branch thermodynamics and heat study about the heat and transfer of heat from one form of energy into another form. The next branch of physics in this book is oscillation and waves. This branch is composed of two words: oscillation, which means vibrations. Oscillation is actually that types of motion in which a body move to and fro, यानी in which a body move about a fixed point to and fro manner, or left to right या up and down. The example of oscillations are vibrations of a tuning fork, vibrations of a simple pendulum, and mass attached to a spring. These are the example of oscillations. And when a body oscillates, it produces waves. Waves are basically the energy carrier. वेव हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। There are different kinds of waves in our daily life. When we speak, we produce a sound wave. This sound wave produced by the vibration of our vocal cords and carry the sound energy from our mouth to the ear of other person या other hearing device. When we throw a stone in a pool of water, here the up and down motions of water are produced. These up and down motion of water are called
the water wave. These water wave carry the energy from one point to another point in the surface of water. So these are the example of different kind of waves. The another example of waves are when a mass attached to a spring, when we displace the mass from one position, mean from its mean position to another, and when we release it, it start vibration in up down manner. So this kinds of motion is called vibratory motion, and this vibratory motion produce an wave. So the all the knowledge which is related with oscillation and wave, yeah, the oscillation produce waves, yeah, the knowledge which are related with waves, this knowledge is can be obtained from the branch of physics which is called oscillation and waves. Oscillation and waves are that branch of physics in which we study about the vibratory motion and the productions of wave from the vibratory motion. Examples of this branch, examples are the sound waves, water waves, and spring waves. In this given figure, there is a device which is called a simple pendulum. Simple pendulum is composed of a mass and a string which are fixed with a fixed support. When we displace this mass from its mean, this is a mean position, when we displace it from its mean position, and this is extreme position. When we displace the mass from its mean position to its extreme position and we release the mass will move, will produce a special kind of motion which is about its mean position in to and fro manner. Such kinds of motion is known as oscillatory motions or vibratory motion. As a result of this oscillatory motion, a wave is produced. This is extreme position, this is mean, this is also extreme, this is mean. So this wave is produced as a result of vibratory motion. The next branch of the physics is optics. We deal about light in our daily life. Light is a form of energy, so the study of light in our daily life is called optics. So light is also a vast field. The knowledge which are related about light, the transfer of light, and the nature of light is called optics. So optics is basically that branch of physics in which we study about lights and transfer of light, the properties of light, nature of light, and also we study about that instrument which are related with optics, such as glasses, such as microscope, such as telescope, etc. We also deal mirror, lenses, and human eye in this branch of physics. Properties of light mean reflection. One property of the light is a reflection. Whenever a light rays strike to a polished surface, it will bounce back. This phenomena is called a reflections of light. Whenever a light enters from a denser medium to rare medium, or rare medium to denser medium, it produces another kind of phenomena which is called refraction of light. In refraction of light, light is slightly bent towards the normal. Another phenomena is a dispersion of light. In dispersions of light, whenever a light strikes to an unpolished surface or rough surface, it will disperse into different directions. Such kind of phenomena is known as dispersions of light. In optics, we also deal about the lenses and mirrors. So optics is that branch of science, physics, in which we study about the light, nature of light, properties of light, lenses, mirrors, human eye, telescope, microscope, etc. The next branch of physics in this textbook is electricity and magnetism. We also familiar with electricity in our daily life. Electricity is a very great source of energy which is used in our daily life. Today, without electricity, the human of light is very difficult. So what is electricity? How electricity is produced? What is electricity? How electricity is converted from electrical energy into other form of energy? So the knowledge which is about electricity is related with electricity and magnetism.
There is another kind of word used in this branch is magnetism. Basically, electricity and magnetism are related with each other. Electricity is produced by the motions of some metallic object near to the magnet. So with the help of magnet we can produce electricity. So electricity is and magnetisms are that branch of physics in which we study about the charges, motion of charges, and the productions of electricity, transmissions of electricity, and the transfer of electricity from one form of energy into another form of energy. In this branch of physics we also about study the generators, magnet and electromagnet is basically that magnet which is produced, this is an artificial kind of magnet which is obtained by the passing of current into a conductor. This was the end of today's lecture. Inshallah we will meet, we will discuss another branch, the remaining branch of physics in our next lecture. Thank you so much.